हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लिस्ट, टपल एंड सेट डाटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अलोंग विथ मी। टू क्रिएट द लिस्ट, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ जो कि होगा समथिंग लाइक दिस, ओके, 4 and 5, and I'm just going to print this list here. Okay, so if I run this code then you can see here यहाँ पर जो है हमारा जो भी लिस्ट था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो टू फॉर्मेट द कोड यहाँ पे शॉर्टकट है Ctrl Alt and L. If you press that one, so it will automatically format your code, okay, using the pip8 convention. यहाँ पर जो है if have to print length of this list, then यहाँ पर जो है हम simply length function का यूज करेंगे to print the length of the list. So you can see here यहाँ पर जो है इस लिस्ट का लेंथ 5 है, so यहाँ पे ये 5 प्रिंट कर दिया है। So list index starts from 0, so if I just print index of 0, so it will print 3 here, okay. So if I just print here, so you can see here यहाँ पर जो है इसने 3 को प्रिंट कर दिया है। So if I have to print this last element of this list, then you say that okay, we can print here something like this one, length of list -1, because this list start from 1. So if I print length -1, so it will print 5 here, that means last element of the list. So I'm just commenting this line so that you will find all this code in my GitHub repo. If I run this code, so you can see here यहाँ पर जो है हमारा last element print हो गया है। So यहाँ पर जो है हम last element को something like this भी print कर सकते हैं, that means -1. So Python में क्या है, हमारा जो negative indexing है ये भी support करता है, that means -1 means last element of the list. It doesn't matter आपका लिस्ट कितना बड़ा है और कितना छोटा है, it will just get the last element and it will print here. So इसी तरह से if have to print the second last element, then we can use here -2, so it will print 4 here, okay. So if I run this code, so you can see here यहाँ पर जो इसने 4 प्रिंट कर दिया है, okay. So let's say यहाँ पर जो है I am just commenting all this line and all, range of element को प्रिंट करना है, then how can we print that one? So यहाँ पर जो है हम स्लाइसिंग का यूज कर सकते हैं। अगर आपने मेरा स्ट्रिंग का वीडियो देखा होगा then वहाँ पर भी हमने ये स्लाइसिंग मेथड का यूज किया है to print the sequence of the character from the string. So सेम यहाँ पे भी Python सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर हमारा 0 इंक्लूसिव इंडेक्स होगा बट 2 हमारा इंक्लूसिव इंडेक्स नहीं होगा, ये हमारा होता है एक्सक्लूसिव इंडेक्स। सो इट विल प्रिंट ओनली 3 and 1, ओके। सो इफ आई जस्ट रन दिस कोड, सो यू कैन सी हियर यहाँ पे 3 and 1 प्रिंट हो गया है। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको जब हमें 0 से प्रिंट करना है देन फर्स्ट इंडेक्स को हम यहाँ पे ओमिट कर सकते हैं टू print this one, so still it will print the same, okay. so इस तरह से जो है हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। so let's say अगर हमें यहाँ पर जो है इंडेक्स 2 से till the end तक प्रिंट करना है, then हम यहाँ पे जो सेकेंड इंडेक्स है इसको हम यहाँ पे ओमिट कर देंगे, then it will print from index 2, that means 0, 1, 2, that means 2, 4, 5, okay, it will print till the end. So if I just run this code, then you can see here यहाँ पर जो है 2, 4 and 5 जो वैल्यू है यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। so इस टाइप से जो है हम लिस्ट इंडेक्सिंग का यूज करते हैं टू प्रिंट द लिस्ट एलिमेंट इन पाइथन। लेट्स से यहाँ पर जो है हमें इस लिस्ट में कुछ न्यू एलिमेंट को ऐड करना है, देन हम उसको इन पाइथन कैसे कर सकते हैं। टू ऐड द एलिमेंट इन लिस्ट वी हैव सम मेथड्स हियर लाइक append. So if I just append here something like 6, so it will add this 6 at the end of this list, okay. So after that if I just print this
list again. ओके, सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर जो है हमारा 5 के बाद जो 6 है वो यहाँ पे ऐड हो गया है. सो ये तो हो गया हमारा एंड में ऐड करना एलिमेंट को. अगर हमें किसी भी एलिमेंट को एट ए स्पेसिफिक लोकेशन पे ऐड करना होगा, देन हाउ कैन वी ऐड हियर. सो पाइथन में वी हैव वन मोर मेथड called insert. Okay, so if I just insert element, so it takes 2 argument. So what position do you want to insert the element? So मैं यहाँ पे 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, लेट्स से वैल्यू 7. सो यहाँ पर जो है वैल्यू 7 हमारा 0 इंडेक्स पे इंसर्ट होगा. दैट मीन्स जो बाकी का एलिमेंट है वो 1 पोजीशन राइट शिफ्ट होगा एंड 0 पोजीशन पे जो 7 एलिमेंट है वो ऐड हो जाएगा. सो इफ आई जस्ट प्रिंट हियर, देन यू कैन सी यहाँ पर जो है 7 0 इंडेक्स पे ऐड हो गया है एंड ऑल द एलिमेंट शिफ्टेड 1 पोजीशन राइट टू इट्स पोजीशन. सो इस टाइप से जो है हम लिस्ट में जो एलिमेंट है उसको ऐड कर सकते हैं. देयर इज वन मोर मेथड कॉल्ड एक्सटेंड. ओके, सो यूजिंग एक्सटेंड मेथड उसको भी यूज करके हम लिस्ट में जो है न्यू एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं. सो लेट मी जस्ट कमेंट इट आउट दिस कोड. ओके, सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक लिस्ट 2 क्रिएट कर रहा हूँ एंड यहाँ पर जो है मैं कुछ एलिमेंट ले रहा हूँ 7, 9 एंड 8. ओके, एंड यहाँ पर नम्स में हम यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे लिस्ट 2. देन यू कैन सी हियर, दैट मीन्स जब हम एक्सटेंड का यूज करते हैं देन इट टेक्स इटरेबल लिस्ट टू ऐड इन द लिस्ट. ओके, सो दैट यहाँ पर जो है नम में ये हमारा एक लिस्ट है जो कि इटरेबल है एंड इट विल ऐड इन दिस नम. सो इफ आई रन दिस कोड, देन यू कैन सी हियर यहाँ पर जो है 7, 9 एंड 8 जो है ऐड हो गया है एट द एंड ऑफ द लिस्ट. सो अगर आप बोलोगे अगर हमें इस एलिमेंट को यहाँ पे ऐड ही करना है, देन वी कैन ऑल्सो यूज append method. So I can tell you the difference here. What is the difference between append and extend? So if I just use here append method to add the list, so it will add as it is in this list. Okay, so you can see here यहाँ पर जो है as it is यहाँ पर इस लिस्ट को इस पोजीशन पे इसने ऐड कर दिया है. So this is the difference between append and extend. So if I just print here -1, so you can see here यहाँ पर जो है ये 7, 8, 9 जो लिस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है इसको ये यहाँ पे प्रिंट करेगा. So if you want to add like this one list, then you can use append method and give the another list to add at the end of this list, or you can also use extend method if you want to insert individual element inside the list. So this is the difference between append and extend method. So it's based on your use case, what do you want to use in your scenario. Okay, so let's say अगर हमें इस लिस्ट से एलिमेंट को रिमूव करना है, then how can we remove the element from the list? So method is very simple. We have to give remove and what element do you want to remove. So I want to remove 5 here. Okay, so that 5 is present in this list, and after that I am just printing this number here. So if I run this one, then you can see here यहाँ पर जो है हमारा लिस्ट 3, 1, 2, 4 कंटेन करता है. and if I give here something like 7 which is not present in our list, okay, so that it will give the error message, that means X is not in the list. So this is the error message you will receive if remove element take one argument which is 7. Okay, and if 7 is not present, then you will get this error message, that means X means this 7 is not present in the list. Okay, so there is one more method called pop. So pop method is always remove element from the last. So if I just do this one pop of number, so it will remove 5 from the list and it will just
print the this one list. So here I am printing the number, so it's printing here. So pop also return the number, what number it has popped from the list. So if I just catch that number, okay, and if I print this pop number here, and after that I am printing this number here, so you can see here यहाँ पर जो है ये 5 यहाँ से लिस्ट के एंड में से ये रिमूव किया and it is assigned to this pop variable, and after that I am printing this list. So in this way we can remove the element from the list. Let's say यहाँ पर जो है हमें list को reverse करना है, then how can we reverse the list? So I am just printing this list. So this is my list and I want to reverse this list, okay. Then in list we have method called reverse. So if I just use this method in list, so it will reverse the list. So it come like 5 4 3 2 1 3, okay. And so this is how we can reverse the list. So like this, if we have to sort the list, then in list we have one method called sort. So this sort will do sorting element in place in the list, okay. So if I just run this one, then you can see here my list is sorted here. So in this way, if I have to sort in the reverse order, that means descending order, so here we have to pass one argument called reverse equal to true. So it will sort the list in descending order. So if I run this one, then you can see here 4 5 4 3 2 1, it has sorted in reverse order. So this is how we can sort the list in Python. There is one more function called sorted, okay. So sorted, what it does, it just takes the list, okay, and it sorts the list and it return the new list from here. So in this way we can sort the list here. So if I just catch this one sorted list and if I just print here this sorted list, so this is used when you don't want to modify your existing list and you want to do sorting and assign some new variable. So in that case you can use sorted here, okay. So if I just print here, then you can see here this is my first list and this is my sorted list. So sorted also takes here a reverse argument if you want to do the sorting in reverse order. So if I just run this one, then it sorted in descending order, okay. So this is how sort and sorted we can use in our Python code to sort the list in Python. Same way we can also apply some function on our list. So something like if I just print here mean of nums, then it will print minimum number from the list. So minimum number is 1, so it has printed 1. So likewise I can also use max function on list to print the maximum number of the list, which is 7, and in this way I can also use here sum function on list to sum all the number of this list and print the sum. So if I just run this one, then it is 15. So in this way we can use mean, max and sum function on our list. Let's say यहाँ पर अगर हमें किसी भी वैल्यू का इंडेक्स पता करना है, that value at what index inserted or present in our list, then how can we find out the index of that number. So यहाँ पर जो है हमारा एक index function मेथड है, इसको हम यूज कर सकते हैं. And if I want to find out what is the index of 3, okay, so let me check 3 is present or not. So 3 is present at index 0. So if I just find out index of 3, okay, this is not a string list, that's why it was given that error here, okay. So this is my number list, okay. So if I just print here index of 3, so it has given 0. And let's say if I give here 7 and I want to print the 7 index, then it's showing
7 is not in the list. Okay, so you will get some value error in the index function. So if I have to find out 5, what is the index of 5? So it's 4. Okay, so this is how we can find out the index of any number in our list. So likewise, if we have to see whether any number is present or not in our list, then we can also use in operator here to find out the number. So let's say I want to find out 5 is present in our list or not. So I can use num1 में से if 5 is present or not. Okay, so I think I'm giving it in reverse order, 5 in nums or not. Okay, so if I just do this one, then it has returned true, that means 5 is present in our list. And same way, if I give 7 here and try to run this code, then it's saying false, that means 7 is not present in our list. So this is very useful operator in list. So as we go ahead, you can see how much useful this in operator in Python. So here, if I have to print all the element from the list, then we can use here for loop to print all the element here. Okay, so this is for loop here. So this number, it will just give for item is a variable, you can give any name here. In numbers, number is our list which is present here. Okay, so it will just print all the number one by one here in this print statement. So if I run this one, then you can see here यहाँ पर 3, 1, 2, 4 and 5 is printed. So why it is printed in the new line? Because Python print statement is printing everything in the new line. Okay, so this is how it is printed in all the number in new line. So इस तरह से हम इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं फॉर लूप में टू प्रिंट all the numbers in Python. So this is how for loop works in Python. Okay, so let's say यहाँ पर जो है हमें number को, let me just do one thing, let me just create one more list here. Okay, so you can understand this code. So let me just create one more list called courses, and here I am just giving some courses name like history, art, then computer science. I'm just writing the short word computer comp science, and also I'm just giving one design here. Okay, and अगर आप यहाँ पे चाहते हो ये string जो है list of string, इससे हमें कॉमा सेपरेटेड या फिर हाइफन सेपरेटेड में सारे को ज्वाइन करना है एंड इसको एक स्ट्रिंग में वैल्यू रिटर्न करना है, देन उसको करने के लिए हम यहाँ पे जो स्ट्रिंग का ज्वाइन मेथड है उसको यूज करेंगे टू कन्वर्ट दिस लिस्ट इनटू स्ट्रिंग कॉमा सेपरेटेड. ओके, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ न्यू कोर्सेस. यहाँ पे हमें एक कॉमा सेपरेटेड जो ज्वाइन है स्ट्रिंग का मेथड इसको यूज करेंगे और यहाँ पे जो कोर्सेस है इसको पास कर देंगे. एंड इफ आई जस्ट प्रिंट हियर न्यू कोर्सेस, देन यू कैन सी हियर यहाँ पर जो है ये जो हमारा कोर्सेस है ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा विथ कॉमा सेपरेटेड. सो दिस इज हाउ वी कैन जस्ट कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग वैल्यू इन लिस्ट वैल्यू इन स्ट्रिंग विथ कॉमा सेपरेटेड. सो इसके बाद अगर हमें इस स्ट्रिंग वैल्यू को फिर से लिस्ट में कन्वर्ट करना है, देन यहाँ पर जो है हम स्प्लिट मेथड का यूज करेंगे टू कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग वैल्यू अगेन इनटू द लिस्ट. सो इफ आई जस्ट split this one with comma and white space, how it was converted into the string, and back to I just create again list here from the string. Okay, and if I just print here, okay, I'm just printing in the new print statement list courses, then you can see here यहाँ पर जो है हमारा ये जो string मैंने convert किया था list को स्ट्रिंग में, वो फिर से हमारा जो लिस्ट में ये कन्वर्ट हो गया है. तो इस टाइप से जो है हम लिस्ट को स्ट्रिंग में या फिर स्ट्रिंग वैल्यू को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं इन पाइथन. सो लेट्स गो अहेड एंड वी कैन सी टपल हेयर. ओके, सो
यहाँ पर जो है टपल में जो भी फंक्शनलिटी है वो सब सेम ही रहता है, ओनली जो डिफरेंस है वो है लिस्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं बट टपल को हम पाइथन में मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड mutable and immutable. So list is mutable but tuple is immutable. So I have some code snippet here. I am just pasting here, okay, to save time and all. So यहाँ पे हमने क्या किया है, एक list 1 क्रिएट किया है जिसका वैल्यू 1 2 3 4 5 है एंड list 1 वैल्यू को मैंने list 2 में असाइन कर दिया एंड list 1 ऑफ 0 इंडेक्स में हमने यहाँ पे आर्ट जो वैल्यू है इसको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ. लेट मी जस्ट डू वन थिंग, लेट मी जस्ट इंसर्ट हेयर इंस्टेड ऑफ आर्ट आई एम इंसर्टिंग 6 हेयर एंड उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिस्ट 1 को प्रिंट कर रहा हूँ एंड इसके बाद मैं यहाँ पे लिस्ट 2 को प्रिंट कर रहा हूँ. ओके, सो यू कैन सी द डिफरेंस हेयर. सो आई एम जस्ट कमेंटिंग दिस कोड फॉर नाउ. सो यहाँ पर जो है ये हमारा लिस्ट का कोड है एंड इफ आई रन दिस कोड सो यू कैन सी हेयर अगर हमने लिस्ट 1 में जो वैल्यू है 6 इंसर्ट किया है देन दिस इज ऑल्सो चेंजिंग इन लिस्ट 2 बिकॉज दिस इज म्यूटेबल इन पाइथन. सो इफ आई जस्ट कमेंट दिस लाइन एंड इफ आई जस्ट uncomment this one and instead of art if I just assign 6 here then it will give error here. So let me just save this code and run this one. So you can see here it's giving error. So tuple object does not support item assignment. So this is the difference between list and tuple. After that all the functionality is same only and if you want to just iterate all these elements then again you can use here for loop to iterate this tuple element in Python. So if I just iterate here tuple 1, okay, and if I print here item then it will again go to all the element, okay, and it will print this item here. So if I just print here then it has printed all the item 1 to 5. So this is how we can iterate the tuple and let me just go to set here. Okay, so this is how tuple works in Python. So to create tuple यहाँ पे हम जो है parenthesis को यूज करते हैं एंड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर parenthesis का यूज करते हैं. So this is one more difference between list and tuple. So यहाँ पर मैं एक सेट क्रिएट करता हूँ. So सेट क्रिएट करने के लिए हम curly parenthesis का यूज करते हैं and let me just create set here something like 1 3 5 6 7 and I just reformat this code using Ctrl Alt and L and let me just print this set here. Okay, so यहाँ पर जो है set हमारा कीवर्ड है, so इसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं in Python. So let me just use here sets, okay, instead of set. So it's printed here. So if I just run multiple times, so what is the difference between set, tuple and list is set is unindexed in Python. That means the order it does not preserve when you insert the new element in the set. Okay, and list and tuple are indexed in Python. So it's not giving here anything, it's not changing the order, but this is the difference in set. Set is unindexed. Okay, so same way अगर हमें यहाँ पर जो है set में भी कोई भी element को find out करना है whether that element is present in or not, so I can use here in operator to find out 6 is present in set or not and it is returning true because 6 is present in the set and we use set for the reason that set is very efficient in doing this operation and set also does not allow any duplicate element in it. So this is one more difference in set. So यहाँ पे let me just create one more set here. Okay, so let me just give this name set1 and I am just assigning some
value something like 6, 7, 10, 11. Okay, and I'm just reformatting this code. And if you want to see difference between these two set, okay, what are the element is extra in one of the set, then we can use here intersection. Okay, intersection we use here to find the common element between both the set. Okay, so यहाँ पर जो है दोनों set में जो common element कौन सा है, if I use intersection it will print the common element which are present in both the sets. So if I just run this code, then you can see here यहाँ पर जो है common element 5, 6 and 7 present है in both the set. Okay, so in this way if we have to use what is the difference between both the set, then we can use here difference method to define what are the element is present in sets and which is not present in set 1. So if I just print here, then you can see here यहाँ पर जो है 1, 3 element is not present in set 2, या फिर we can say here its name is set 1. Okay, so this is how intersection and difference works. So same way, if we have to do, that means all the elements we have to just combine all the element of set 1 and set 2, then we can use here union method to combine all the set 1 element and set 2 element. So this is how we can combine set 1 and set 2 element in Python. Okay, so this is how set, tuple and list works in Python. Okay, so I'm just commenting all this code and you will find all this code in my GitHub repo. After I'll do some grouping of all the element and I'll also write down some comments and all on this element so that you can understand in my GitHub repo as well. So before ending this video, I'll just go ahead and do some quick knowledge here. Okay, so if you want to create some empty list here, empty list, tuple and set, so you can create here something like this. If you want to create an empty list, then you can create empty list something like this one using a square parenthesis, and you can also create using the constructor of the list. Same way you can create empty tuple using the parenthesis, and you can also create the using the constructor of tuple. But if you create here set using this curly parenthesis, then this is not right. It will create the dictionary here by default. So to create the set, we have to use set constructor here to create the set in Python. So this is all for this video. अगर आपके पास में कुछ भी डाउट है regarding to this video, then write down in my comment section. I'll try my best to answer your question. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय and keep coding.